Hey, hi, welcome guys. So, have you ever wondered that if your money is doubling every year, suppose you have done some investment in some uh, mutual funds or some stocks. So, have you ever wondered that if money doubles year after year after year, and you've invested some amount initially, कुछ आपने investment किया starting में, और पैसा हर साल में डबल हो रहा है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा? After 3 years, what you will get? We wonder that thing. And why I'm asking this question? Because see, learning JavaScript or learning any technology has to be non-boring, है ना? अगर हम उसको basic syntax, so anybody can learn. But why we are learning? Because JavaScript is used to uh, do calculation, solve uh, some logical problems. तो यहाँ पर भी एक हम logical problem ले रहे हैं ना? We are taking a logical problem here that if your money is doubling every year, so what will be the amount given you put some amount initially? So after 3 years, what will be the amount? And this is the problem we are going to solve today in this session. And during solving this problem, we are also going to learn JavaScript and HTML. Okay, so I will try to make it as interesting as possible and as simple as possible. And I'll stick to the point. And this is my second session of JavaScript. And first session was very basics. If you have not watched, you can go and watch. It is the introduction. What is JavaScript and how does you can play around JavaScript with using JavaScript developer console and all those things. I'm not going to repeat. If you can watch my previous video, it will be helpful. If you have not watched, then also it is fine. Okay, because I'm going to cover from scratch. तो ये वीडियो में मैं बहुत बेसिक से स्क्रैच से कवर करने वाला हूँ. Don't worry if you even if not watch that thing is okay. Okay, so now, but if you don't know any what I will say, I've never learned HTML. It might be a little bit uh, some concept will be what I can say. It will be difficult for you to digest in the first go, but just hold on. Okay, HTML is a prerequisite. Basic HTML. What is HTML tags and all those things? See, a web page. This is a web page, right? If you don't know what is .html file, it will be difficult for you, right? So if you have not learned HTML, you can go. But if you have not, if you haven't, you don't know anything about HTML and JavaScript, then also you can watch this video and see how much you can learn. Okay, so let us start. So suppose आपको एक ऐसा एक वेबसाइट बनाना है, या वेब पेज बोलो, इसको एक सिंगल वेब पेज है ना, which looks like this. Okay, and you यहाँ पर question mark है, we will replace this question mark by actual amount. कि if I put suppose 10,000 and it is doubling every year, in 3 years, what will be the amount? That result will print here. Same thing we will do uh, with any amount. You can change the amount. So we'll do this thing today and see how does it work. And at the end of this video, I will give you some more assignments. Like if you solve this problem, I'm going to give you two more assignments. Sorry, two more. What I'll say. Uh, what I will say this thing. Sorry for this thing. Uh, two assignments. Okay, which will be similar to this thing. Like money is doubling every year, so there also we will do the same thing. Suppose you have to calculate, okay, how much will be money after 5 years or 10 years. एक assignment ऐसा लेंगे, दूसरा assignment लेंगे जहाँ money is doubling after every 2 or 3 years. Huh? Okay, that I'll we come to later. But let's start with this thing. Okay, so how do you calculate this thing using JavaScript? है ना? How we can do this thing? So for that thing, what I have done, I have created a folder where I'm keeping my files. No? So अगर आप भी अपना वर्क कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके पास एक फोल्डर होगा जहाँ पर अपना जो भी आप वर्क कर रहे हो, अपना फाइल्स स्टोर कर रहे हो, यू कैन स्टोर देयर. सो आई हैव क्रिएटेड अ फोल्डर which is JavaScript series. I'm keeping everything there. You can also create. This is a session 2 for me and for you. So वहाँ पर मैंने सब files create किया. Okay, and I've opened this already in what I'll say, opened already in Visual Studio, but I'm not going to show you everything. I'm going to create a new, what I'll say, uh, yeah, new demo1.html. We'll start from scratch. Okay, if suppose I'm assuming आपको कुछ भी नहीं आता है, so start from there. तो एक HTML फाइल में क्या होता है, बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, there are HTML tags. Okay, HTML आपने लिखा,
You can write anything. Suppose I write welcome to JavaScript series session 2. ये हो गया. Okay, and if you save it, ये save हो गया. Now this obviously this is in some folder. You can see the path. यहाँ path दिया हुआ है ना. ये तो हमारा फोल्डर में आप देखो यहाँ डेमो 1 क्रिएट हो गया बिकॉज हमने वहां से क्रिएट किया. कहाँ से क्रिएट किया? विजुअल स्टूडियो से. सॉरी, विजुअल स्टूडियो कोड. So this is a very good editor. If you have not used, you can go through some links online. आपको मिल जाएगा where you can go how to use Visual Studio Code. It's very good. Simple है. आप डाउनलोड करो or you can open a folder. Okay, we can open a folder. I have done open a folder. I selected that folder where I'm working. So this is my folder. I've selected JavaScript and session 2. You can also do the same thing. I've already selected this thing. And then all the files will appear here. जो भी files है यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. और you can create more files by clicking the plus thing. And you can give the name. So I've done the same thing. Demo1.html मैंने already दिया. And this you can see this thing. Okay. So I want to see how does it look like. This is a HTML file. और whenever we हमको मुझे एक web page बनाना है, उसका extension .html होना चाहिए. You can see this is a Chrome symbol, right? Because it's a web page. If I double click on this thing, it will open this thing. You can see this thing and welcome to JS2. क्योंकि मैंने वहां पर एक मैसेज दिया या we can say simple text दिया HTML में. HTML का I'm not going to teach you. This is just I'm going to teach you JavaScript. HTML का series you can watch from somewhere else, or I have also made some introductory videos. You can go through that. Today we'll focus on JavaScript. ठीक है. HTML is static text. इसमें कुछ लॉजिक नहीं है. जो भी आपने दिया वो डिस्प्ले किया ब्राउजर में, राइट? आपने बोला ये डिस्प्ले करो, डिस्प्ले किया. सपोज आई वांट टू मेक इट बोल्ड, तो मैं इसको I will give some tags, bold tag. Okay, I'll close it. Open and close, open and close. So this works like a tree. Open करते हैं हम, close करते हैं. HTML is the main tag. उसके अंदर we can have lot of tags. This thing is a bold tag. इस syntax का मतलब क्या है कि we are trying to make this as bold, है ना? This file. So browser के पास जब ये फाइल जाएगा तो उसको समझ में आएगा कि ये जो टेक्स्ट है इसको मुझे बोल्ड करना है. ठीक है. So if we go here and again see this thing, I will again this. You can see this is bold. I have refreshed this thing, right? Reload किया, आप देखो reload करने पर ये bold हो गया. But I'm not going into JavaScript. Sorry, HTML. Today we'll focus only on JavaScript and that problem. If your money is doubling every year, how do you do that? How much will be the amount after 3 years, right? Now for JavaScript, you have to write one tag which is script tag. Open and close. आप ऐसे open and close करो. Now जो भी आप logic लिखोगे JavaScript, you have to write inside the script tag. Okay. So what I'm going to do, if you see my this thing, हमारा problem क्या था? It should look like this thing. Amount after 3 years, if it doubles every year, right? So first of all, what is the initial amount? We don't know. So we don't know the initial amount. So the initial amount, let's suppose we have to assume something. So first of all, आप assume करो कि आपका initial amount क्या है. Okay? So put initial amount. Initial amount would be what? It depends on you. Suppose I take initial amount is 10,000. Now 10,000, if I write, it will not work. First of all, this is a value, 10,000, but we have uh, in any programming language, may it be any language, C, C++, JavaScript, Java, any language, right? We store value in some named, what I would say, variables, okay? Or some, we can say some kind of identifier, which is known as variable, right? So for that thing, the syntax is where. Where is a keyword, okay? And then I will write sum equal to 10,000. So my, तो मैंने क्या किया यहाँ पर इनिशियल अमाउंट दे दिया कि इनिशियल अमाउंट कितना है 10,000. उसके लिए मैंने क्या किया, अगेन आई विल रिपीट, आई हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल. वेरिएबल का नाम क्या है? सम, SUM. यू कैन गिव ABC आल्सो, you can give A also, you can give A1 also. There's some, I'm not going to syntax today because today we'll focus on the logical part कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि मनी डबल हो रहा है, how do I write a program, right? And this is the first logical program in JavaScript. So just hold on and you'll see the result. So suppose I give var A, I will make very simple. Some नहीं बोलता हूँ, A बोलता हूँ, but let's be better. Use a proper naming convention. Why? Because tomorrow somebody see your program or code, they don't understand what is mean A or B or C. So use something which makes sense. So let's stick to the sum name.
तो मैंने एक सम वेरिएबल बनाया, उसका अमाउंट दिया 10,000. नाउ द problem statement is this: money is doubling every year. So if I ask you, okay, after 1 year, sorry, I forgot, this double slash is for comment. So this will not execute. This is for your reference. Suppose tomorrow you to go and check मैंने क्या लॉजिक लिखा था. This will not execute. This is comments. For comments you use double slash. Okay, so it will not execute. This is for your reference or anybody reference. They will understand the program. So मैंने फिर से एक कमेंट लिखा आफ्टर 1 year क्या हो जाएगा अमाउंट. तो सम this variable will become double. Okay, sum will become double. So sum equal to sum multiplied by 2. Multiplied का symbol क्या है? Star symbol है. In the keyboard you can see it will be there. Okay, so this star symbol is there. जहाँ पर 1 2 3 4 8 लिखा है वो वहां पर आप देखो आपको स्टार सिंबल दिख जाएगा. ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे आप. So sum after 1 year it will be sum into 2. Okay, then okay, so let's do one thing. जो भी है अमाउंट वह मैं उसको प्रिंट करूंगा. सो हाउ डू आई प्रिंट? फॉर दैट थिंग यू हैव टू राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड यू टू प्रिंट द वैल्यू. तो मैं बोलो सम प्रिंट करो जो भी हुआ. अच्छा, आफ्टर 1 year क्या वो पहले देखो. आफ्टर 3 year क्या होगा? फिर लुक इनटू. देखो जब भी प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हो यू एनालाइज द प्रॉब्लम. ठीक है, आफ्टर 3 years क्या होगा? विल लुक इनटू दैट थिंग लेटर. बट अभी आप ये देखो कि अच्छा 1 year पर कितना होता है, डबल करते हैं. और डज माई प्रोग्राम इज सिंटैक्टिकली करेक्ट? सिंटैक्स प्रॉपर है कुछ? समटाइम्स योर सिंटैक्स इज रॉन्ग, इट विल नॉट एग्जीक्यूट, है ना. डोंट कंप्लीटली राइट ऑल द लाइंस इन प्रोग्राम एंड देन यू रन इट. फर्स्ट आप क्या करो, आप वन बाय वन स्मॉल से स्टार्ट करो एंड एग्जीक्यूट करो एंड देन यू ऑब्जर्व इट हाउ डज इट वर्क. ओके, ब्रेक इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम. लार्जर प्रॉब्लम को ब्रेक करो स्मॉल प्रॉब्लम में. अभी क्या हो रहा है? सम मल्टीप्लाई मैंने 2 से किया. मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट मींस व्हाट? ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है. दिस एंटायर फाइल एचटीएमएल आप जो देख रहे हो डॉट एचटीएमएल फाइल है. दिस इज नोन एज द डॉक्यूमेंट. ओके, सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज अ फंक्शन. ओके, फंक्शन मींस सम कमांड्स, इंटरनल कमांड्स. ठीक है, ये हम इनबिल्ट है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग. ये सिर्फ कमांड्स है. तो आप याद रखो कि मुझे अगर प्रिंट करना है वैल्यू ऑन द वेब पेज, डिस्प्ले करना है, तो मैं सिंपल करूंगा डॉक्यूमेंट dot write and the variable name. अगर मैं ऐसा करूंगा तो this command will take this as a input and print it. It will give display it. So let me run this thing. अभी मैंने initial 10,000 दिया. आप देखो after 1 year क्या value होता है. And welcome to GS class. I'll go back to the browser and I will ref this thing. अभी आप देखो क्या हुआ. It becomes 20,000. I will just zoom in. ठीक है, तो मैं zoom किया मैंने इसको ताकि इतनी easy. दिस वाज स्टैटिक टेक्स्ट, दिस वाज एचटीएमएल. ये एचटीएमएल था. आपने इसको तो नहीं, हमने तो इसको नहीं छेड़ा. इट इज एज इट इज, राइट. मैंने क्या किया, जो इनिशियल अमाउंट दिया था उसको बोला कि अच्छा 1 year में कितना होगा. मैंने वो कैलकुलेट किया यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड डिस्प्ले किया. तो जस्ट होल्ड ऑन. ओके, एंड यू कैन ट्राई एट योर एंड और यू कैन वॉच द एंटायर वीडियो. देन असाइनमेंट भी कर सकते हो. और इफ यू वांट टू डू इट पैरेलली साइड बाय साइड while watching the video, that is also good, no problem. So whatever is fine for you. The way of everybody has different learning styles. Now सेम थिंग हैव टू डू आफ्टर 2 years. तो सम में वो वैल्यू सम का वेरिएबल चेंज हो गया. सम में 10,000 का वो मॉडिफाई हो गया. सम अभी 2,000 हो गया. वन मोर थिंग बिफोर आई जंप इनटू दिस थिंग, यू कैन आल्सो डिबग इट. सो डिबग मींस यू कैन एग्जीक्यूट और ऑब्जर्व ईच लाइन कि अच्छा ये पहला लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो क्या हुआ, वेरिएबल वैल्यू क्या था. सेकंड लाइन पे आया तो वेरिएबल वैल्यू क्या था. यहाँ जब आया तो क्या हुआ. सो एवरी लाइन यू कैन ऑब्जर्व and see what is happening. That is known as debugging. So debugging बोलते हैं. So how can you do that thing? Just go in this triple dot in Chrome browser or any browser. You'll find there's a option as developer tools. More tools, yeah, more tools में developer tools आ रहा है. Directly developer tools भी आ सकता है. Okay, just press that and this you can see the source. Source means what? This demo1.html ये तो डिस्प्ले कर रहा है, बट ये एक्चुअल फाइल का कंटेंट क्या है. Just double click on this thing, demo1.html. You can see this file content will appear here. So I'm going to do this thing.
डॉक इनटू सेपरेट विंडो, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, ये सेपरेट विंडो हो गया। अब यहाँ पर आराम से देखो, तो आपने जो ये यहाँ पर ये फाइल था वो ब्राउजर में भी लोड हो गया है, राइट? एंड ब्राउजर में डिस्प्ले कर रहा है एंड इट वर्क्स, राइट? एंड इफ यू वांट टू, ओके, सी हाउ दिस जावास्क्रिप्ट वर्क्स, जस्ट कम हियर, यहाँ पर आके आप डबल क्लिक करो या सिंगल क्लिक करो। आप देखो ये जो आपको, यू कैन सी दिस ब्लू tick or whatever arrow. This means now we have put a break point. This is known as a break point. So what will happen next time if you reload this thing, it will not give you the output. It will start. So let me reload. मैं इसको reload करता हूँ। अब देखो यहाँ पर आप what output you can see? You can see welcome to GS2 तो आया, ये मैसेज तो आया, HTML तो आया, बट वो रिजल्ट अभी तक नहीं आया। Why? Because वो जावास्क्रिप्ट अभी तक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, वो रन ही पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। वो कहाँ पर है अभी? दैट इज स्टिल लाइन नंबर 8। देखो यहाँ पर वो हमने उसको होल्ड कर लिया है कि अच्छा बाबा होल्ड करो, अभी लाइन नंबर 8 पे हो, वेट करो। एंड लेट मी सी, सपोज यू आर डेवलपर, यू वांट टू चेक क्या हुआ, कैसे हुआ, राइट? तो आप उसको देखो कैसे हो रहा है। सो अभी आप देखो सम इक्वल टू 10,000। नाउ इसको इग्नोर करो, इग्नोर दिस थिंग, ओके? जस्ट यहाँ पर आप देखो सिंबल्स है, ये है कंटिन्यू, this is for going to next call. Just use this thing, second one. Okay, and this is F10 also. You can use F10 key also. It will go to next line, or you can just use click on this arrow. So it will execute only one line at one time. तो ये जो लाइन है वो एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो ये सिंबल पे आप क्लिक करो, सिंबल पे क्लिक करोगे, स्टेप ओवर नेक्स्ट फंक्शन कॉल, तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तो फिर सम में क्या वैल्यू है, जस्ट मूव योर माउस टू सम वेरिएबल। आप देखो सम में 10,000 यू कैन सी, इट विल शो यू कि सम वेरिएबल का वैल्यू क्या है, 10,000। अभी इस लाइन पे पहुंच गया, यू कैन सी दिस बिकम्स येलो, मींस इट इज हाइलाइटिंग दिस लाइन, अभी इस लाइन पर है, इज वेटिंग, डिबगर इज पास्ड, स्टिल नॉट, योर प्रोग्राम इज नॉट कंप्लीटेड, अभी वेट कर रहा है वो इस लाइन पे। आप बोलोगे नेक्स्ट लाइन पे जाओ, तब वो एग्जीक्यूट करेगा, राइट? तो यहाँ पर सम इंटू टू मल्टीप्लाई होगा, और जो वैल्यू आएगा रिटर्न होगा वो जो भी रिजल्ट होगा दैट विल बी असाइंड टू सम, जैसे मैथ्स में करते होगे, y इक्वल टू 2x, सिंपल है, वैसा ही है कुछ ऐसा, नथिंग लाइक कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल है। तो इफ यू डू sum equal to sum into 2, okay, so it becomes 20,000, you can see everything, every line you can see 20,000। document dot write sum, अभी ये हम करने वाले हैं, but if you go to this thing, it's not printed, why? Because ये लाइन रन ही नहीं हुआ है ना, document dot write। जब आप document dot write करोगे then only it will uh, write to the document, means it will print in this file, in this HTML file display करेगा, right? You can see अभी मैंने कर दिया, and अभी आप देखो यहाँ पर 20,000 आ गया, okay, and it's waiting for my command to complete। मैं इसको कमांड किया, स्क्रिप्ट खत्म हो गया, ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया। अभी देखो डिबगर कहीं पॉस्ट नहीं है, सब कुछ फिनिश्ड हो गया, and you can see this display is coming। It's very easy to, so always use the debugging tool, developer tools। अगर you are you want to become a JavaScript developer or a front-end developer or UI developer, you have to understand how HTML works, how JavaScript works। ठीक है, but let's come back to the same point। अभी हमको 3 साल का निकालना है, ठीक है? तो what we are going to do, एक साल के बाद मैं सेम कॉपी पेस्ट करूंगा, दिस कॉपी दिस थिंग पेस्ट, ओके, एंड दिस विल चेंज आफ्टर 2 इयर्स। आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाएगा, तो सम जो भी था 20,000 था, वो 20,000 का जो भी हो जाएगा। फिर सेम चीज मैं यहाँ कॉपी करूंगा आफ्टर 3 ईयर, एंड दस अभी देखो सम यहाँ पर डबल हुआ फर्स्ट टाइम आफ्टर 1 ईयर, फिर वो वैल्यू यहाँ इसको साइन हुआ, अगेन तो डबल्ड वैल्यू है, राइट? सम इज नॉट 10,000 नाउ, इट इज 20,000 हियर, राइट? अगेन तो डबल वैल्यू है, इट विल अगेन डबल आफ्टर 2 इयर्स। तो जो वैल्यू है मैंने यहाँ साइन किया, सेम चीज रिपीट आफ्टर 3rd ईयर, एंड देन यू कैन डू द सेम लॉजिक, राइट? सिंपल मैथ्स, ओके? इफ यू वीक इन मैथ्स तो थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, बट अगर बेसिक भी बताया तो यू विल नॉट सो मच हार्ड, ओके? बट अगेन आई विल शो यू हाउ टू डिबग इट, इट इज इजी, राइट?
So my debug point is still there. And वो हटाया नहीं. If you go, you can see debug point is still there. So I'm just going to refresh this thing again. Again, you can see same thing. Sum आया, sum 10,000. Okay, you can see sum equal to 10,000, right? Sum multiply over 2 से after 1 year 20,000 हो गया. After 1 year अगर पैसा निकालोगे तो get 20,000. अब 20,000 मिलेगा. After 2 years देखो 40,000. Why? Because sum already become 20,000, right? यहाँ पर after 1 year, right? तो 20 के तो डबल हो जाएगा, 40 हो गया. और अगर आप यहाँ पर निकालोगे आफ्टर थर्ड ईयर तो सम इज ऑलरेडी 40 आफ्टर 2 years. It becomes 80,000. Okay, so 80,000, and now if you see the result, it is 80,000. So I'm not going to take long. ये आपका खत्म हो गया, ठीक है. Now you try to display the same thing. I have already made 2 assignments for you. One assignment is like this. Let me show you. So जो हमने अभी किया वो ये किया कि find the amount after 3 years if it doubles every in 1 year, right? अब I am going to give you assignment number 1, where I am saying find the amount after 10 years if it doubles in every same problem है, but I am increasing the time. 3 years नहीं, आप सोचो कि 10 साल में कितना हो जाएगा. Suppose you have the same money, you are investing in the same of 10,000, and I am asking you that what will be the amount after 10 years if it is the same rate, it doubles every year, right? हर साल डबल हो रहा है तो 10 साल में कितना हो जाएगा. You find this thing, right? This is your assignment number 1, first one. Second assignment is, suppose जनरली डबल नहीं होता है. अगर आप बहुत लकी हो, somebody is very expert in stocks and all those things, it can double, but generally नहीं होता है. So what people do, people invest in some mutual funds or some other things. वहां पर क्या होता है, takes time. Sometimes it doubles in 3 years or 5 years. ऐसा भी होता है. Suppose you put in FD, right? In FD what happens, it doubles in 5 or 6 years, depends on the interest. Okay, or maybe more. Okay, but मैंने यहाँ क्वेश्चन असाइनमेंट्स क्या दिया है कि आप पता करो कि same amount, whatever initial amount you have, you put it, what will be amount after 30 years? Think about very long term. If it is doubling not in a single year, it's doubling in every 3 years. मतलब अभी आपने 10,000 डाला तो 3 years बाद वो 20,000 होगा, not after 1 year. तो आप 30 years में आपको कितना मिलेगा. नाउ दिस इज अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम. अगर यू आर नॉट वीक इन मैथ्स यू कैन स्किप दिस थिंग, बट अगर आप, बिकॉज व्हाई यू लर्निंग जावास्क्रिप्ट, बिकॉज यू हैव टू डू सम एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग, राइट? तो अगर बेसिक्स मैथ्स नहीं आएगा आपको, so how will you do this thing? So solve some real world problem that will give you the experience. Do these 2 assignments, okay? And I have already uploaded in GitHub. If you refer my GitHub, I will post the link. Okay, if you just search my name, you get my GitHub link. I have already this series, okay, React by Rahul. So go to this repo, React by Rahul. In this thing, I have already made some JavaScript and HTML sessions. Go to session 2. Session 2 में demo.html जो आज लिया वही है, ठीक है. You can refer that thing. Similar है, not exactly same है जो आज लिया लाइव के लिया. और सॉल्यूशन में मैंने दोनों का सॉल्यूशन दिया, असाइनमेंट नंबर 1 असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है, जो मैंने पूछा अभी, ठीक है. ये असाइनमेंट नंबर 2 है, असाइनमेंट नंबर 1 है. फर्स्ट है कि आप 10 में निकालो कितना अमाउंट होगा, डबल एवरी ईयर हो रहा है सेम रेट से. और दूसरा में है कि 30 ईयर्स में निकालो, वेरी लॉन्ग टर्म. थिंक कि आप अपना जॉब आज स्टार्ट कर रहे हो, 30 ईयर्स आपका जॉब चलेगा और मोर देन दैट, राइट? और डबल एवरी ईयर तो होता नहीं है जनरली. आपने म्यूचुअल फंड में डाला, कहीं और डाला, और 3 ईयर्स में डबल हो रहा है. सपोज एक कंजर्वेटिव फिगर आप पकड़ो, 3 to 5 years, वट एवर, यू कैन चेंज दिस अमाउंट, अप टू यू. बट मैंने तो सॉल्यूशन दिया इसको, ये सॉल्यूशन दिया 3 ईयर्स में अगर आप डबल होता है तो 30 ईयर्स में कितना होगा. वो सॉल्यूशन इज ऑलरेडी इन दिस थिंग. यू कैन रेफर इट, बट डोंट रेफर इट without trying. Try from your end, think of all the possible, take your time. Okay, agar you really want to learn something, you have to try yourself. You can't become a programmer or developer by watching my videos and copying the GitHub code, right? आप मेरा कोड कॉपी करोगे उससे कुछ नहीं होगा. So don't do that. Okay, and I'm not going to take much time. I hope this will be useful for you. So let's meet in next class, and thank you for watching.